Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will be taking start of our chapter that is reproduction. And as we have discussed yesterday in yesterday's topic that actually the reproduction is the ability of an organism to produce the offspring and to produce the species of its own kind ताकि अपनी जो है वो नस्ल को अपनी स्पीशी को आगे बढ़ा सकें. ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी हैव डिस्कस दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स, accessory ducts, and we have the male sex hormone that is androgen. We have discussed up to the urethra, right? And today we will be taking start of accessory glands, that is the seminal vesicle provide the seminal vesicle. Where is the seminal vesicle? The seminal vesicle provide an alkaline fluid containing fructose sugar, ascorbic acid, and a coagulating enzyme which is called the vesiculase enzyme, as well as other substances that enhance the sperm motility, thus improve their fertilizing power. एक्चुअली सेमिनल वेजिकल आपके पास वो एरिया है जहां पर एक अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके अंदर फ्रक्टोज शुगर है, एस्कॉर्बिक एसिड है और एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं वेजिक्यूलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को एनहेंस करता है और इसकी फर्टिलाइजिंग पावर को इंक्रीज करता है. This is important according to the MCQ point of view. The enzyme which is present, the coagulating enzyme which is present in the seminal vesicle, which enhance the sperm motility, is vesiculase enzyme. The testes are located outside the abdominal cavity. The testes work best at the temperature slightly less than the core body temperature. The optimum temperature for the sperm development is 35 degrees centigrade. So you have to be very careful. Usually they ask the question that why the testes are extra abdominal. The prostate encircles the urethra just below the bladder. You know the prostate is present just below the urethra. Its secretion is a milky, slightly acidic fluid that contains citrate as a nutrient source and several enzymes, especially hyaluronidase. ठीक है, hyaluronidase. Okay, Cowper's gland secrete mucus and an alkaline fluid into the urethra. So the Cowper's gland, they secrete the mucus and the alkaline fluid into the urethra. As you know that the route for sperm and urine is same. ठीक है, वो जो ejaculatory material या fluid निकलता है और उसका रूट और यूरिन का रूट एक ही है. ठीक है, the alkaline fluid neutralizes the acidity of the urine in the urethra. The bulbourethral gland produce thick and clear mucus. The bulbourethral gland, they produce actually the thick and the clear mucus. Now, what is semen? Semen is that white liquid that is excreted from the male genitalia, and that is white sticky mixture of sperm and secretions of the accessory gland. The liquid substance in the semen provides nutrients and protection to the sperm and act as a transport medium for the sperm. Prostaglandin and the sperm decrease the viscosity of the mucus guarding the entry cervix of the uterus. यानी आपका क्या होगा, सीमेन में प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो इसकी विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस decrease the viscosity of mucus guarding the entry of यानी सर्विक्स में जब इंटर होता है फीमेल के सर्विक्स में, एंड स्टिमुलेट द रिवर्स पेरिस्टालिसिस इन द यूट्रस. यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इसकी जो प्रेजेंस है वो इस वजह से है कि ये स्पर्म जो है वो रिवर्स ना चले जाएं, एंटी पेरिस्टालिसिस करते हैं, पेरिस्टालिसिस को रोकते हैं, यानी यूट्रस की तरफ जाए, अगेंस्ट ना जाए.
facilitating the sperm movement through the female reproductive tract. यानी कॉप्यूलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान जब स्पर्म जो है वो सर्विक्स से जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्पर्म की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होगी, या सीमेन की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी कि दोबारा से पेरिस्टालिसिस ना हो, और आपका ये जो मेल ने जो सीमेन रिलीज किया है ये डायरेक्टली ओवरी की तरफ जाए, यूट्रस की तरफ जाए, इसके अगेंस्ट ना जाए, right? Spermatogenesis, actually the spermatogenesis, it is the process of sperm formation in the male, and this is present in the seminiferous tubules. As I have shown you before, that what is seminiferous tubules, actually the seminiferous tubules are present inside the testes. When we cut the section, we look into the seminiferous tubules, and inside these seminiferous tubules the process of spermatogenesis takes place. The spermatogonia, the process takes place in the seminiferous tubules. Spermatogonia are the outermost cells which make the epithelial wall of the seminiferous tubules. यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सेल्स आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल वॉल के. किसकी एपिथेलियल वॉल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल वॉल. दीज सेल्स आर जस्ट बीनीथ द बेसल लेमिना. ठीक है, बहुत ही करीब ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं. The spermatogonia divide continuously by mitosis. So the spermatogonia, they divide by the mitosis. Firstly, it divides by the mitosis. There is mitotic division in the spermatogonium. Then there is primary spermatocyte. Then there is first meiotic division. Then there is secondary spermatocyte. And this secondary spermatocyte divides by meiosis and give rise to four spermatids. Now these spermatids, they will form the sperm in case of the male reproductive system. There are two types of cells, that is type A cells and type B cells, two distinctive daughter cells. The type A daughter cells remain at the basement membrane to maintain the germ line. यानी आपके पास ये जो टाइप ए सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेंगे, और टाइप बी गेट्स पुश टुवर्ड्स द ल्यूमेन. ल्यूमेन होता है सेंटर, जिस तरह हम इंटेस्टाइन में भी पढ़ते थे ना कि ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन. सिमिलर इज द केस विद द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटिड्स हैं टाइप बी वाले वो ल्यूमेन की तरफ रहेंगे, और टाइप ए वाले जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ रहेंगे, वेयर इट बिकम्स अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिजाइन टू प्रोड्यूस क्या फोर स्पर्म्स, राइट? Each primary spermatocyte undergo meiosis one, forming two smaller haploid cells called secondary spermatocytes. They are explaining this diagram, okay? They are explaining this diagram. They are explaining this diagram. You have to keep in mind this diagram, okay? The secondary spermatocyte continue into the meiosis 2, and their daughter cells called spermatids are formed. Each spermatid is a round non-motile haploid cell. Usually it is framed as a question that spermatid is motile or immotile. It is non-motile. Actually the sperm is motile, right? The spermatogenesis is a process in which spermatid change into the motile and active sperm. You have to write this line, these two lines in the very first topic of spermatogenesis with two headings of definition, right? Spermatogenesis is a process in which spermatids are formed. Spermatogenesis is a process in which spermatids change into the motile and active sperm. During this process, a spermatid elongates, sheds its excess cytoplasm and forms a tail, right? That is also the part of the spermatogenesis, right? Now, what is sperm? Uh, Sperm is actually we can say that, let me share a screen. Now, as you can see in this diagram, that we have the head of the sperm, the mid piece of the sperm, tail of the sperm, and the end piece of the sperm, right? ठीक हो गया. फिर we have the acrosome at the top of the sperm.
Then we have the plasma membrane nucleus in which the genetic material of the male is present. Then we have the centrioles. Then we have the mitochondria, which is providing the energy to the sperm. Then we have the flagella, and we have the axial flagella, tail. We have the end piece, right? So this is the diagram of a sperm showing the mitochondria as well as the acrosome and nucleus. Here you can see the acrosome very clearly. Acrosome, nucleus, centriole, mitochondria, and a tail. All right. This is the structure of a human male sperm. The sperm or spermatozoon animal seed, it is also called the animal seed, is a very small haploid cell. Sometimes in the viva and in MCQs, they ask that whether the sperm is haploid or diploid. It is actually the haploid cell. It has a head, neck, midpiece, and a tail. The head contains the nucleus having the haploid cell of set of chromosomes. So you know that कि आपके पास ये जो हेड है जिसमें न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं और क्रोमोसोम्स हैं. Adhering to the top of the head is the acrosome. The lysosome, like acrosome, is produced by the Golgi apparatus. You have to highlight this line for the MCQ and contain hydrolytic enzyme hyaluronidase that enable the sperm to penetrate and enter an egg. So they ask that which type of enzyme which is present in the sperm will help the sperm to penetrate into the egg, that is hyaluronidase. The neck of the sperm is very short and contain a pair of centrioles. So the neck of the sperm contain single centriole or pair centriole. This is also asked as a question, okay? The microtubules of one of the centriole elongate and run entire the length of the tail. It forms the axial filament. So ये जो centriole है, एक centriole इसमें elongate हो जाता है और वो axial filament बनाता है. जैसे कि आपने इस डायग्राम में भी देखा कि आपके पास axial filament क्या है. Now you can see this दिस इज द एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट ये आपके पास ये वो सेंट्रियोल ही था जो कि आपके पास माइक्रोफिलामेंट बनाकर और क्या बनाता है, एक्सियल स्केलेटन बनाता है. ये बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में, ठीक है. तो आपके पास द मिडल पीस कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्पायरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट. द प्रोसेस बीइंग बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 14 इन मेल एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. अच्छा, फीमेल्स के केस में ओजेनेसिस जो है वो जैसे ही बेबी जो है वो मदर बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है तब से ओव्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवरी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है लेकिन स्टक हो जाती है प्यूबर्टी तक. लेकिन मेल के केस में ये 14 इयर्स के बाद ये सारा प्रोसेस होता है. यूजुअली ये भी क्वेश्चन किया जाता है एमसीक्यूज में. Every day, a healthy adult male makes about 400 million sperms. ठीक है? Highlight this point. Hormonal control, that is also very important point, important topic, important chapter. Hormonal control process of spermatogenesis is controlled by the hormonal secretion from the hypothalamus and the pituitary gland. Again, the higher brain centers are involved in the process of spermatogenesis. If there is any stress, any tension, or any kind of a health issues, then the male would not be able to produce the normal amount of sperms, and that will cause the infertility. The hypothalamus release gonadotrophin releasing hormone which control the release of anterior pituitary. Gonadotrophin, follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone stimulates the spermatogenesis by stimulating the Sertoli cells.
Actually, these are Sertoli cells or Sertoli cells of the testes, that is the part of the seminiferous tubule. seminiferous tubules के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं. सर्टोली सेल्स को जाके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग जाके हिट करता है, नॉक करता है कि अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करो, स्पर्म बनाओ, राइट. Luteinizing hormone stimulates the Leydig cells found adjacent to the seminiferous tubules in the testicle to release क्या, टेस्टोस्टेरोन. तो आपके पास ये दो टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हैं, FSH एंड LH, दैट आर knocking at the door of the cells like Sertoli cells and Leydig cells. Sertoli cells stimulated by the FSH and Leydig cells are stimulated by LH to release the testosterone. Testosterone causes the growth and the development of the germinal epithelium to form the sperm. कौन सा germinal epithelium? ये seminiferous tubule का epithelium बढ़ाता है growth और इसकी development. Inhibin hormone is produced by the Sertoli cells and इसको pronunciation इसकी different है, Sertoli भी कहते हैं, Sertoli cells भी कहते हैं, and serves to control the spermatogenesis at the normal rate. So inhibin, it is a type of a hormone which is present in the Sertoli cells and this serves to control the spermatogenesis. So आपके पास higher brain centers में अगर हम देख लें तो gonadotrophin है, gonadotrophin releasing factor है, फिर FSH है, फिर LH है. और अगर हम टेस्टिस के लेवल पर देख लें तो एक हार्मोन है इनहिबिन जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं ताकि क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल रेट पर हो. When the sperm count is high, inhibin release increase and it inhibit anterior pituitary release of FSH. इनहिबिन जाकर मैसेज देगा FSH को कि अपनी प्रोडक्शन कम कर दो, स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं. एंड द हाइपोथैलेमिक रिलीज ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोफिन, यानी व्हेन स्पर्म काउंट फॉल इनहिबिन सिक्रीट डिक्लाइन स्टीपली. ठीक है, ये तो आपको पता है कि जैसे ही स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वहां पर मैसेज जाएगा नेगेटिव फीडबैक का कि जी बस और जरूरत नहीं है स्पर्म्स की, तो इनहिबिन जो है वो इनहिबिट कर लेगा, वहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाए तो इनहिबिन अपनी सिक्रीशन खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाएगी, इसकी सिक्रीशन कम होती रहेगी. ठीक है. Now we came to the topic of female reproductive system. The female reproductive system is very important and it's important for you to understand as you are the future doctors. तो यहाँ पर फिर आपके पास वो स्टूडेंट्स जो गायनी की फील्ड को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू understand all the reproductive systems whether it is related with the male or female. ठीक है, गायनी साइड पे जिन्होंने जाना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, MBBS करना है, दैट इज important for those students and is important for those as well जो कि आगे अपनी कोई भी फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन ये आपसे रिलेटेड है. तो इससे इसकी नॉलेज इसलिए जरूरी है ताकि आपको अपने अंदर होने वाली चेंजेस का पता चले. द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ फीमेल इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, we are complex than that of a male. Not only must she produce gametes, but her body must prepare to nourish a developing embryo. So the responsibility is on the shoulder of the female कि आपने क्या करना है, 9 months you have to nourish the developing embryo. Female reproductive system consists of a pair of ovaries, oviduct, uterus, cervix and vagina. Let me share a screen with you. That is also very interesting topic. And here you can see the ovary, female ovary, human female ovary that consists of the uterine tube, or it is also called the fallopian tube. We have the pair of ovaries and we have the uterus, then this is the fundus and this is the cervix and this is actually the vagina. Okay, we have layers in case of uterus, that is endometrium, myometrium, right? And then we have the flagella like structures which is holding the ovary. ठीक है,
So these are called the fimbriae. Okay, these are called the fimbriae. Now came to the screen. Ovaries are female gonads, gametes, which produce ova and release hormones. So the ovary which I have shown you in that diagram, it is actually the gonads producing the ova, releasing the hormones. The pair of ovary flank the uterus on each side, and each ovary is held in place in the peritoneal cavity by several ligaments. So, what is ligament? It is bone to bone or muscle to bone. You have to answer in WhatsApp, okay? The ovaries are the ovaries are almond shaped, measure about 3 to 5 centimeter long, 2 to centimeter wide. This is important, okay? Within the ovary are many tiny sac-like structures called ovarian follicles, each of which consists of an immature egg called oocyte. ठीक है, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बता दूं ओवरी का, that is the structure of ovary. Internal structure, we have the primary oocytes, we have the development of oocyte, we have the development of the follicles, and we have the mature follicle having the oocyte inside it. As you can see in this diagram, in this follicle we have the egg, and the rupture of the egg is called ovulation, and the leftover part is called corpus luteum. If there is no pregnancy, the corpus luteum will degenerate, but if it's pregnancy, then corpus luteum will remain for uh, 8 hours and will be acting as a temporary endocrine gland, releasing the progesterone for the female. Okay, come back to the topic. ठीक है, after ovulation the rupture follicle is transformed into a glandular structure. So corpus luteum is a glandular structure. Why I'm stressing this a lot? Because it usually came in MCQs, right? Okay. Fallopian tubes और oviducts बहुत दफा पूछा जाता है fallopian tube का दूसरा नाम, second name. So you have to keep in mind, okay? Fallopian tubes form the initial part of the female duct system. They receive the ovulated oocyte. Now, what is fallopian tube, right? This is fallopian tube, okay? It will receive the ovulated oocyte. This is the fallopian tube. This is the fallopian tube, ठीक है? इसको हम कहते हैं fallopian tube. It is 10 centimeter long and extend near from the region of an ovary to empty into the uterus. The uterine tube contains sheet of smooth muscles and contain both ciliated और non-ciliated cells. आपके ये जो यूट्रस की अगर इंटरनल एनाटॉमी को हम स्टडी करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सीलिएटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन सीलिएटेड हैं, ठीक है? असल में आपके पास यहाँ से जो एग है उसकी डेवलपमेंट होती है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में कि ओवरी में कितनी डेवलपमेंट होगी और फिर ये जो ट्रिकल करेगा और यूट्रस के अंदर जाएगा जिसको हम मोरूला कहते हैं और वो फिर मदर बॉडी में एम्ब्रियो बनता है. तो इंशाल्लाह that is also very interesting topic and inshallah we will discuss in the embryological development. ठीक है? Non-ciliated cells produce a secretion that keep the oocyte and the sperm if present moist and nourished. Mark this line, ठीक है? Non-ciliated cells. Ciliated cells क्या करते हैं? Non-ciliated cells क्या करते हैं? Oocyte is carried towards the uterus by a combination of muscular peristalsis and the beating of the cilia. यानी oocyte
यूट्रस की तरफ कौन ले जाएगा? ये मस्कुलर पेरिस्टालिसिस होगी, बीटिंग होगी सीलिया की, जो उस साइट को यूट्रस के अंदर लेकर जाएगी, राइट? और अगर स्पर्म है तो उसको कौन नरिश करेगा? नॉन सिलिएटेड सेल्स. नाउ व्हाट इज यूट्रस? एक्चुअली द यूट्रस इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. अच्छा, निदा मुझसे पूछ रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ सेक्शन ई, ma'am, reproductive systems are present in the pelvic region. Yes, some part of it is present in the pelvic region, but the external genitalia are the outside, okay? Anterior to the rectum, uterus is anterior to the rectum and posterior to the bladder. It is about the size and shape of an inverted pear. So if you want to make a clear concept that how the uterus is looking, it is just like an inverted pear. Peach, nash, नहीं sorry, peach तो नहीं, pear, नाशपाती जिसे हम कहते हैं. It is a hollow, thick-walled muscular organ. It is a muscular organ, right? That function to receive, retain, and nourish a fertilized ovum. ठीक है? The duty is very tough. Uterus has to perform a very tough duty. It receives, it retains, and nourish a fertilized ovum. The wall of the uterus is composed of three layers. ठीक है? Perimetrium outermost, myometrium middle, endometrium within, peri, myo, endo. ठीक? अच्छा. Myometrium is the middle thick muscular layer composed of bundle of smooth muscles that contract rhythmically during childbirth to expel the baby from the mother's body. So the nature has provided the myometrium kind of a muscles. The endometrium is inner spongy lining of the uterine cavity. If fertilization occurs, the young embryo take roots into the endometrium. क्या होता है कि जब आपके पास, वैसे तो नॉर्मली केस नहीं है प्रेगनेंसी का, तो ये शेड हो जाती है और नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो एंडोमेट्रियम और से और वॉस्कुलराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, एम्ब्रियो ने डेवलप होना. जैसे एक प्लांट डीपली रूटेड नहीं होता मट्टी के अंदर, इसी तरह एम्ब्रियो भी डीपली अपनी रूट्स बना लेता है एंडोमेट्रियम के अंदर. ठीक है? Cervix. It is a narrow entrance to the uterus from the vagina. It is normally blocked by the plug of mucus. ठीक है? Cervix. The vagina is thin-walled, 8 to 10 centimeter long tube and extends from the cervix to the body exterior. ठीक है? It is often called the birth canal. The other name for the vagina is the birth canal, and it provides a passageway for the delivery of the infant and for the flow of menstrual cycle. ठीक है? The urethra is embedded in its interior wall, right? Now the process of oogenesis. Now what is oogenesis? Like spermatogenesis, which is the part of the male reproductive system, oogenesis is the part of female reproductive system. The process of egg formation in the female is called oogenesis. Mark it down. The process of oogenesis takes years to complete. First, in the fetal period, the oogonia, the diploid stem cells of the ovaries multiply rapidly by the mitosis. क्या होगा कि आपके पास मेल के केस में तो वहां पर क्या था, 14 ईयर्स में स्टार्ट हो रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन यहाँ ये जो प्रोसेस है इसने बहुत जो है वो अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली. ठीक है? बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली. अगर हम देखें मेल और फीमेल को, अगर हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें. ठीक है? तो आई हैव अ ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर दैट. आई एम सर्चिंग देयर. I have a beautiful diagram for the spermatogenesis. Inshallah, I will share the handmade diagram with you, okay? For the spermatogenesis. How it arrests. Arrest mean क्यों stop हो जाता है वहां पर इसकी process, और फिर क्यों puberty के बाद ही start होता है.
ठीक है, आई विल शेयर द हैंडमेड oogenesis process with you, right? I hope this type of teaching, if you have any complaint related to that, then you can ask from me, then you can, आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन as such मुझे कोई वो नहीं लग रहा। जब सबको समझ आ रही है तो इट्स इजी। हैंडमेड से फिर ये होता था कि टाइम बहुत लग जाता था। तो एक्चुअली हमें एचओडी ने, प्रिंसिपल ने कहा है कि हमने रिप्रोडक्शन जो है वो विंटर ब्रेक से पहले पहले करवाना है, राइट? तो अगर फिर भी किसी को कोई इसमें कंप्लेन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। लेकिन ये रिप्रोडक्शन ऐसा टॉपिक है जिसमें डायग्राम्स हमने जो है वो स्लाइड शेयर में आपके साथ मैंने शेयर की इसी वजह से, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो समझने में, ठीक है? इसके इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है, या इस मेथड से कोई कंप्लेन है, तो यू कैन freely say it to me, okay? Okay, now as you can see in this diagram, we have the structure of an ovary, and we have the primary follicles, growing follicles, we have the follicular cells, ठीक है? Then we have the mature follicle consists of the fluid, and then we have the what you can say it, ovulation process. The egg is ovulated, ठीक है? Then the empty follicle it remains, that is corpus luteum, and the regression means जैसे आप अगर फैट ये नहीं होते गोट्स और कुर्बानी की ईद में आप लोग वो जो फैटी थिंग नहीं होती, उसको अगर आप तवे पे रखें ना और उसको आप थोड़ा जला दें तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, ऑयल में कन्वर्ट। तो सिमिलर इज द केस विद द कॉर्पस लूटियम। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो बिल्कुल वैसे ही ये मेल्ट हो जाता है और फेगोसाइटोस्ट हो जाता है और इसका जो कहानी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर प्रेगनेंसी है ना तो फिर ये रहता है थोड़े दिन के लिए, वो भी थोड़े टाइम के लिए, कुछ आवर्स के लिए, ठीक है? राइट? So the primary oocyte begin the first meiotic division but become stalled, means arrested late in the prophase 1 and do not complete it. They remain in their state of suspended animation all through the childhood. प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, स्टॉल होता है, रुक जाता है ये प्रोसेस। फिर कब स्टार्ट होगा? ये वेट ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट इसको कितना वेट करना है कि बच्ची जो है वो 10 to 14 ईयर्स की हो जाए, ठीक है? At puberty, a small number of primary oocytes are recurred मतलब selected each month. However, only one is selected each time to continue the meiosis one, ultimately producing the two haploid cells. Haploid cells, half number of cells that are quite dissimilar in size. The larger, which contain the cytoplasm of the primary oocyte, is the secondary oocyte. इसमें आपके पास यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास ये ऊगोनियम है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद आपके पास एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। फिर सेकेंडरी oocyte मियोटिक डिविजन्स में कन्वर्ट होगा, उसमें से भी एक जो है वो पोलर बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह से एमसीक्यूज में आता है कि आपके पास लास्ट में कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं? 3, और एक ओवम बनता है। इन ह्यूमन द सेकेंडरी oocyte arrest in metaphase 2, ठीक है? And it is this cell that is ovulated. If ovulated spermatocyte is not penetrated by, अच्छा ये हुआ था कि छोटे वक्त प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ था, 14 के बाद
मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा जब तक कि स्पर्म आके पेनेट्रेट ना हो जाए, टच ना हो जाए, ये अपनी मेटाफेज 2 के बाद कंप्लीशन करता ही नहीं है, रुक जाता है वहां पर. But if the sperm penetrate does not occur, it quickly completes its meiosis too, and ये क्या बना लेता है, large ovum and a tiny secondary polar body, second polar body. The unequal cytoplasmic divisions that occur during it ensures that fertilized egg has ample nutrients. तो क्या होगा, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इसका रीजन ये है कि फर्टिलाइज्ड एग को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, राइट. 6 to 7 days journey to the without nutrients containing cytoplasm, the polar body degenerate and die. ठीक है. अच्छा, the menstrual cycle, we will start the menstrual cycle tomorrow inshallah. I hope that this is clear to you all, and menstrual cycle is also very easy, but it is very important topic according to the board point of view, and we have the last topic for that. And after the menstrual cycle we will do the miscarriage and our chapter will be completed. ठीक है. इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि in the smart course we don't have sexually transmitted diseases and we don't have the disorders. Okay.